Hello students, this is Rahmat Khan from Shiv Jyoti Educational Group. I hope you all are fine and doing well at your home. Dear students, I request you to watch our video completely and go through your textbooks regularly and study regularly. Dear students, today we are going to learn a very interesting chapter of geography, chapter 5, that is Natural Vegetation and Wildlife, part 1. And in this part 1, the topics which we are going to cover are, first, we are going to understand the relief feature, we are going to talk about the climate factor, we are going to understand what is ecosystem. After that, we are going to discuss about types of vegetation. In that, we are going to discuss two topics, that is tropical evergreen forest, and in the end, we are going to talk about tropical deciduous forest. So dear students, let us start with this beautiful chapter. I request every one of you to kindly open your textbook to page number 42. In this, the first introduction paragraph says, have you observed the types of trees? That means, have you observed the trees around you? If you observe them, and if you notice, I hope we all go from one place to another place one or some other time, right? So अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, if we are going from one place to another place, we will see different types of vegetation. When I talk about vegetation, I am talking about the plants. Okay? So अगर हम observe करेंगे तो हम देखते हैं कि अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग तरह के plants दिखेंगे. For example, some around in desert areas, you won't find the same trees which are there where there is more rainfall. मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं जहां बहुत बारिश होती है उन जगहों पर आपको पेड़ पौधे अलग दिखाई देंगे, एंड इन दोज एरियाज एरिड रीजन वेयर देयर इज लेस रेनफॉल डेजर्ट एरियाज यू विल सी डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीज. ओके, ऐसा क्यों होता है? व्हाई दिस हैपेंस? व्हाई दिस डिफरेंट थिंग्स अपीयर? ऐसे डिफरेंस क्यों आते हैं? व्हाई द पोलर बेयर is in the snow region, why not in the desert area? मतलब मैं आपसे कह रहा हूं कि कैमल जो है वो डेजर्ट एरिया में क्यों रहता है, क्यों नहीं स्नो एरियाज में रहता है? Let us find out everything in this chapter because this chapter is very wonderful. So let us start with this. Okay, so meanwhile, when I tell you to mark important things in your textbook, dear students, kindly mark it in your textbook. That is very important. Do remember, when we learn this chapter, our textbook must be open and every map of this chapter is very important. Okay, so let's start. Okay, so in the first paragraph of our textbook itself, it is given number of species and details. That is, if we observe in India, we are talking about 47,000 species, that is varieties of plant. Okay, that is 10th in the world. We are 10th in the world and 4th in Asia. Second, 15,000 flowering plants are there in India. हम सिर्फ भारत की बात कर रहे हैं. And 6% of the world's flowering plant. And when we talk about this 15,000, that is पूरे world के अगर हम flowers की बात करें तो 6% हमारे भारत में ही है. That is 6%. Okay, 90,000 animal species we have. मतलब 90,000 different varieties of animals are there in our country. Okay, 2,000 bird species, 13% of world's total birds, 2,546 fish species. When I talking about species, that is about varieties, different types. Okay, so 12% of the world stock is there in our country itself. 5 to 8% of amphibians, reptiles and mammals are present in our country. This is the diversity, this is a number of different things which are present in our country, right? This is amazing. Now, next question we have is, we have talked about vegetation. We know vegetation means plants, right? So we have a question here. What is virgin vegetation? What is virgin vegetation? In our textbook, we have here. Do you know? Here, in page number 42 itself, we have a question. Do you know? First one, the virgin vegetation. Okay, please write this question here on the top and the answer is here in the box itself. Okay, so the virgin vegetation which are purely Indian are known as endemic or indigenous species, but those which have come from outside India are termed as exotic plants. This is the answer we have here, and find out here. Okay, so virgin vegetation, a
plant community which has grown naturally without human aid and has been left undisturbed by humans for a long time is called virgin vegetation. मतलब वो पेड़ पौधे जिसको इंसान ने हेल्प नहीं किया ग्रो करने के लिए, दैट इज अनटच्ड, और जो अपने बलबूते पे ग्रो हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वर्जिन वेजिटेशन इन सिंपल वर्ड्स. ओके, सो प्लीज काइंडली मार्क दिस इन योर book because we have one more special thing here, information here, that is the virgin vegetation which are purely Indian are known as endemic. मतलब जो हमारे पेड़ पौधे हैं जो यही ग्रो होते हैं, यही के हैं, they are called endemic or indigenous species, but those which have come from outside, मतलब कुछ पेड़ पौधे जो हैं वो यहां नहीं पाए जाते थे, जो बाहर से लाए गए, they are called exotic plants. They are called exotic plants. This is very important. Let's move on. What factors are responsible for the huge diversity in flora and fauna? So the question is, why there is a huge diversity? Diversity का मतलब इतनी अलग अलग चीजें क्यों अवेलेबल है यहाँ पर, डिफरेंट चीजें क्यों अवेलेबल है, क्यों डिफरेंट प्लांट्स, why different animals are present here? That is what we are going to find out. Okay, so we have the first relief feature. Under relief we have land, we have soil. We are going to talk about that. Fine. So nature of land influences the type of vegetation. मतलब जिस तरह का लैंड होगा उस तरह के आपके पेड़ पौधे होंगे. This is very common, right? Fertile level land is generally devoted to agriculture. Fertile का मतलब होता है हिंदी में उपजाऊ. जो प्लेन लैंड होता है, फर्टाइल होता है, दैट इज मोस्टली यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर. वो लैंड हम ज्यादा खेती के लिए इस्तेमाल करते हैं. Undulating and rough terrains are areas where grasslands and woodlands develop and give shelter to variety of wildlife. वो एरियाज जो पहाड़ी इलाके होते हैं, उबड़ खाबड़ एरियाज होते हैं, जहां ट्रैवल करना बहुत डिफिकल्ट होता है, वहां पर ज्यादातर आपका क्या होता है, कौन रहते हैं, वाइल्ड लाइफ रहती है. और वहां पर आपके ग्रासलैंड्स, दैट मीन्स जो आपके हरियाली बहुत सारी वहां आपको मिलेगी, और जानवर जो है, एनिमल्स, दे ग्रेज देयर, मतलब वो चरते हैं वहां पर. यस, when we talk about soil, different types of soil provide basis for different types of vegetation. आपकी सॉइल जितनी डिफरेंट होगी उतने अलग अलग पेड़ पौधे होंगे. आई विल जस्ट गिव यू एग्जांपल. राजस्थान के अंदर हम कोकोनट ट्रीज ग्रो कर सकते हैं. माइट बी यू विल से सैंडी एरियाज में हो सकता है, बट क्लाइमेट और आपका सॉइल भी वैसा है. आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल. एप्पल्स क्या यहां ग्रो कर सकते हैं डेजर्ट एरिया में? आप कहोगे नहीं. The reason is the soil and the variety of different things. First we are talking about the relief feature. ठीक है, तो soil plays a very important role. जिस तरह की मिट्टी होगी उस तरह के आपके पेड़ पौधे होंगे. ठीक है. Sandy desert soil support cactus and thorny bushes. We have example here. जो सैंडी एरिया होगा, जहां रेतीला एरिया होगा, वहां पर कौन से पेड़ पौधे ज्यादा उगेंगे? कैक्टस एंड थॉर्नी बुशेस. थॉर्नी मतलब कांटे वाले. ठीक है. वेट मार्शी एरियाज, डेल्टिक सॉइल सपोर्ट मैंग्रोव्स एंड डेल्टिक वेजिटेशन. जहां ज्यादा आपकी नमी होगी, ओके, गीली मिट्टी होगी, वहां पर आपके मैंग्रोव्स होंगे. The hill slopes with some depth of soil have coniferous trees, okay, like this shape, coniferous trees. We are going to talk about that also. Fine. So this is about relief feature. We talked about land, we talked about soil. इनके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये वो कारण है जिसके वजह से वैरायटी है, डिफरेंशिएशन आता है. That's why we are talking about this features. Okay. Next is climate. When we talk about climate, we are talking about temperature here and photoperiod. Okay. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. बिकॉज डिफरेंट क्लाइमेट होगा, वहां पे अलग अलग तरह के आपके पेड़ पौधे आपको दिखने को मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो जम्मू एंड कश्मीर, शिमला, वहां देखोगे आप, वहां बर्फ गिरती है कुछ एरियाज में, और वहां पर एट दैट टाइम यू विल सी देयर आर सम ट्रीज लाइक शेप दिस. क्रिसमस ट्री देखा है आपने? दे आर लाइक दिस. व्हाई दे आर लाइक दैट? सी हाउ ब्यूटीफुल नेचर इज. नेचर कितना खूबसूरत है. इट इज इन दिस शेप बिकॉज कभी स्नोफॉल होता है तो इट विल फॉल डाउन. इट नोज वहां पे किस तरह का टेम्परेचर है, किस तरह का क्लाइमेट है, एंड दैट्स व्हाई द ट्रीज आर इन दैट शेप. ओके, सो द कैरेक्टरिस्टिक एंड एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशन आर मेनली डिटरमाइंड बाय टेम्परेचर अलोंग विद द ह्यूमिडिटी इन द एयर, प्रिसिपिटेशन एंड सॉइल. प्रिसिपिटेशन का मतलब होता है बारिश. मतलब कह रहे हैं कि
टेम्परेचर कैसा होगा, वहां कितनी बारिश होती है और वहां मिट्टी कैसी है, इस आधार पे ऑन दिस बेसिस द डिफरेंट वेजिटेशन विल बी देयर. ओके, फर्स्ट आई हैव गिवन यू एग्जांपल. कोकोनट ट्री यहां क्यों नहीं होगा? सैंडी सॉइल तो है, जमीन जो चाहिए, मिट्टी जो चाहिए वो तो है, पर क्लाइमेट जो चाहिए वो नहीं है. दैट्स व्हाई यू कैन नॉट ग्रो कोकोनट ट्री हियर. सो दैट इज व्हाट आई एम explaining. Okay, on the slopes of the Himalayas and the hills of the peninsula above the height of 915 meters, the fall in temperature affects the type of vegetation. जितनी ऊंचाई पे जाते जाओगे आप, जितनी हाइट पे जाते जाओगे, उतना ही आपका टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है. We have learned this. एंड सेम वेजिटेशन भी चेंज होता जाएगा, पेड़ पौधे भी चेंज होते जाएंगे. ठीक है, द टाइप्स ऑफ वेजिटेशन ऑल्सो चेंज. इट ग्रोथ एंड चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल टेम्परेचर एंड अल्पाइन वेजिटेशन. व्हाट इज अल्पाइन वेजिटेशन? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट इन द माउंटेन फॉरेस्ट. फोटो पीरियड. Now you might be thinking, sir, what is photo period? ये photo period क्या है? Okay, the variation in duration of sunlight at different places is due to differences of latitude, altitude, seasons and durations of the day. मतलब कोई ऐसी जगह होती है जहां पे amount of sunlight जो है जरूरी नहीं है कि उतना होगा जो हर एरिया में होता है. फॉर एग्जाम्पल, प्लेस ए, वहां पर सिर्फ दिन के 2 घंटे सनलाइट आती है. प्लेस बी, जहां पे दिन के 5 घंटे सनलाइट आती है. दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट फोटो पीरियड. द अमाउंट ऑफ सनलाइट प्रेजेंट ड्यूरिंग अ डे, कितने घंटे वहां पे सनलाइट होगा. व्हाई? बिकॉज जितना सनलाइट होगा उतनी ट्रीज की ग्रोथ होगी. दैट्स व्हाई दिस इफेक्ट्स, इस वजह से ये स्ट्राइक आपका इफेक्ट होता है. ड्यू टू लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट ट्रीज ग्रो फास्टर इन समर्स. सो वी हैव आंसर हियर. जितना सनलाइट ज्यादा होगा उतना ट्रीज आपका ज्यादा ग्रो करेंगे. फाइन. प्रेसिपिटेशन, आई हैव टोल्ड यू, रेनफॉल, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जहां जितनी बारिश होगी उस तरह के पेड़ पौधे आपको देखने को मिलेंगे. दिस इज ऑल्सो वन रीजन. फाइन. इन इंडिया द एडवांसिंग साउथ वेस्ट मानसून, एडवांसिंग जो बारिश स्टार्ट होती है, आती है, एंड रिट्रीटिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून्स ब्रिंग इन ऑलमोस्ट द एंटायर रेनफॉल. ओके, areas of heavy rainfall have more dense vegetation as compared to other areas of less rainfall. मतलब क्या है? जहां बारिश ज्यादा होगी वहां पे ज्यादा घने पेड़ पौधे होंगे, और जहां कम होगी वहां कम घने होंगे. दिस इज व्हाट इट इज सेइंग. प्रेसिपिटेशन मींस रेनफॉल. Okay, dear students, so on page number 43 we have a table 5.1, very important, because in this table the characteristics of vegetation zones are given. Okay, तो ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है. प्लीज मार्क इट इन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 43. ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों. Why are forests important for human beings? We have a beautiful question. Why are forests important for us? Are forests important? Yes, definitely forests are important because they are renewable resources, play a major role in enhancing the quality of environment. Okay, हमारे वातावरण को अच्छा बनाते हैं. Modify local climate, control soil erosion, regulate stream flow, support a variety of industries. Okay, provide livelihood for many communities. आदिवासी जो होते हैं बेसिकली their home community is forest. बहुत आज भी इंडिया के अंदर बहुत सारे हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं. There are communities living, ट्राइबल जिसको हम बोलते हैं. Okay, offer panoramic or scenic view for recreation. बहुत सारे लोग इन जगहों पर घूमने जाते हैं एंड इट जनरेट्स इनकम फॉर दैट पीपल. ओके, इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह है, हिल स्टेशन है, पहाड़ियां हैं, वेयर पीपल विजिट एंड दे गेट सोर्स ऑफ इनकम. राइट. कंट्रोल्स विंड फोर्स एंड टेम्परेचर एंड कॉजेस रेनफॉल. इट कंट्रोल्स विंड फोर्स, इट एक्ट एज विंड ब्रेकर. पेड़ पौधे जो होते हैं, provides humus to soil, provides shelter to the wildlife. This is very important. और जंगल में जो जानवर रहते हैं उनका घर क्या है? This is forest is their home, right? So this is the importance of forest and that's why we need to protect them. Okay, आगे बढ़ते हैं. India's natural vegetation has undergone many changes due to various factors. What are they? We have one more question. क्या फॉरेस्ट पहले जितने थे आज भी उतने ही हैं? Or they are decreasing or they are increasing? What is happening? और ये changes हो क्यों रहे हैं? Why these changes are happening? That is what? The growing demand for cultivated land. एक तो ये changes इसलिए आ रहे हैं क्योंकि cultivated land are needed more. Population is increasing and we have less land. So that's why what we are doing is we are just vanishing or clearing the forest areas. Development of industries and mining. Where this development is happening? लोग रहने के लिए कॉलोनीज, घर कहां बना रहे हैं? दे आर क्लियरिंग पैच ऑफ फॉरेस्ट फॉर दिस डेवलपमेंट. ओवरग्रेजिंग ऑफ पैस्चर्स,
जो जानवर हैं चरने के लिए दे गो टू दिस एरियाज ओनली, एंड दिस ऑल रीजंस आर देयर दैट आर इफेक्टिंग द फॉरेस्ट एरिया, और इसके वजह से द फॉरेस्ट आर डिग्रेडिंग, डिसअपियरिंग, स्लो बाय स्लो कम होते जा रहे हैं, उनका परसेंटेज कम होता जा रहा है. ओके व्हाट इज इकोसिस्टम? लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज इकोसिस्टम. We might have heard about this term. हमने बहुत बार सुना होगा, अरे ये हमारा इकोसिस्टम है. What do you mean by हमारा इकोसिस्टम? घर है क्या कोई? Yes, it's like home only. But actually what is ecosystem? Ecosystem, all the plants and animals in a given area, all the plants and animals in a given area are interlinked and interdependent. जो एक दूसरे पे निर्भर हैं, एक साथ रहते हैं on each other, as well as the physical environment forming an ecosystem. We are also a part of ecosystem, क्योंकि हम भी interdependent हैं इन सब पे और हम एक साथ रह रहे हैं. Okay? Human beings are also an integral part of the ecosystem. So this is what ecosystem is. Fine. Now we heard about flora and fauna. ये word बहुत बार आया, flora and fauna. What is flora and fauna? Okay? Flora, plants of a particular region or period listed by species and considered as group, and when we talk about fauna, species of animals. That means flora are plants and fauna are, we are talking about animals in simple terms, right? So a note on Indian flora, that is on plants. Okay, this is what we have already seen. We have 47,000 plant species. We are 10th in the world, 4th in Asia. 15,000 flowering plants, 6% of world's total we have in our country itself, India. India also has rich in non-flowering plants like ferns, algae and fungi. Remember this, these are non-flowering plants, that is ferns, algae and fungi. Okay, so these are the different things we have. Okay, what are biomes? What is the basis of the grouping of biomes? Okay, this is just for our knowledge, which is very important for us. A very large ecosystem on land having distinct types of vegetation and animal is called biome in simple terms. This is just to remember, recall. We should know the meaning of biome also. Okay, plant formations are used as basis of their grouping or identification. A big ecosystem is called biome in simple words. Okay, the 5 principal biomes of the world, we have forest, savanna, grassland, desert and tundra. Let's come to the topic. Okay, different types of vegetation. That is page number 44. We have types of vegetation. Vegetation, that is plants. Okay, so on page number 45 we have a map. That is very important, mark it, because in here in this map it is already given tropical evergreen forest, tropical deciduous forest, montane forest, mangrove forest, tropical thorn forest, everything is there. Okay, it clearly specifies which are the areas which fall under which category, right? So page number 45, the map, figure 5.3, natural vegetation, that is important, mark it in your textbook. So we are talking about tropical evergreen forest. Okay, so when we talk about tropical evergreen forest, which forests are called tropical evergreen forest? Requires rainfall about 200 centimeters with short dry season. Okay, found in the rainy parts, western slopes of Western Ghats and island groups of Lakshadweep and Andaman and Nicobar Islands, upper parts of Assam, Tamil Nadu coast. Okay, trees reach great heights up to 60 meters or sometimes more. Fine. Since the region is warm and wet throughout the year, it has luxuriant vegetation of all kinds, trees, shrubs, creepers, giving a multi-layered structure. There are different varieties of vegetation here. Evergreen forest, as there is no definite time for trees to shed leaves. Okay, evergreen, name itself, हरा भरा रहना, ये जंगल आपका हमेशा हरा भरा रहता है. There is no time to shed leaves, because maximum times हम देखते हैं कि टाइम ऐसा आता है, कहीं कहीं हम देखते हैं विंटर सीजन जहां पे आपके ट्रीज अपने लीव शेड करते हैं, तो यहां ऐसा ज्यादा होता नहीं है इन एवरग्रीन फॉरेस्ट. ओके, कमर्शियली इंपॉर्टेंट ट्रीज आर इबोनी, मैगोनी एंड रोजवुड, रबर एंड चिचोना. दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीज. कमर्शियली इंपॉर्टेंट मतलब इन वुड को बेचकर हम पैसा कमाते हैं. कमर्शियली इंपॉर्टेंट विच इज सोल्ड एंड अर्न मनी. ओके,
कॉमन एनिमल्स फाउंड, यहाँ पे कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में? दैट इज एलिफेंट्स, मंकीज, लेमूर, डियर, वन हॉर्न्ड राइनोसोरस फाउंड इन जंगल्स ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल. Okay, other plenty of birds, bats, sloth and other animals are found here. We are talking about tropical evergreen forest. So dear students, page number 44, we have a figure here, 5.2, tropical evergreen forest. In this figure, it's already shown the different types of vegetation, plants in this figure, right? Please mark this and go through this. This is very important. Okay, there are some examples here of different vegetation. This is tropical evergreen forest. Example for you. Tropical deciduous forest. Let's talk about tropical deciduous forest. Requires rainfall between 70 centimeter and 200 centimeter. Okay. Called monsoon forest and are the most widespread forest of India. This is very important because these are most widespread. मतलब इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा फैले हुए यही forest है. Trees shed their leaves for about 6 to 8 weeks. Shed leaves मतलब यहाँ पतझड़ आता है. Trees shed their leaves in summer. On the basis of availability of water, these forests are further divided into moist and dry deciduous forest. इन forest को आगे divide किया गया है, that is आपका moist and dry deciduous forest. We are going to distinguish them. Okay. Common animals found here are lion, tiger, pig, deer, and elephants. Other huge variety of birds, lizards, snakes, and tortoise are found in this type of forest. Okay. Let's talk about moist deciduous forest. On the basis of the availability of water, these forests are further divided into moist and dry deciduous. Okay, the former is found in areas receiving rainfall between 200 and 100 centimeter. Moist deciduous forest we are talking about. This forest exists therefore mostly in the eastern part of the country, northeastern states along the foothills of the Himalayas, Jharkhand, West Orissa and Chhattisgarh, and on the eastern slopes of Western Ghats. Okay, teak is the most dominant species. मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पर कौन सा आपका पेड़ होता है? teak. Okay, on this forest, bamboos, sal, sesame, sandalwood, khair and other trees are also very famous species. Variety of, we are talking about moist deciduous forest. Okay. Next is dry deciduous forest. Moist is where there is more rainfall. Dry, there is no that much rainfall. Okay, dry. The dry deciduous forests are found in the areas having rainfall between 100 centimeter and 70 centimeter. These forests are found in the rainier parts of peninsular plateau and the plains of Bihar and Uttar Pradesh. There are open stretches in which teak, sal, peepal, neem grow. Okay. There is gap between the trees. ऐसा नहीं कि पूरे पेड़ एक साथ ही फैले हुए हैं, एक साथ ही है. Because what happens in dense forest, घने जंगल में आप देखते हैं बहुत सारे पेड़ एक साथ ही रहते हैं. But there in this dry forest, you see पेड़ का जो distance होगा बहुत ज़्यादा होगा आपका. Okay, so here see आपका teak, sal, peepal, neem grow here. Large part of this region has been cleared for cultivation and some parts are used for grazing. ये जो आपका फॉरेस्ट है आपका कल्टीवेशन के लिए, खेती के लिए और जानवर को चराने के लिए आपने यूज किया फॉर ग्रेजिंग. इन दिस फॉरेस्ट द कॉमन एनिमल्स फाउंड आर लायन, tiger, pig, deer and elephant. A huge variety of birds, lizards, snakes and tortoise are also found in this type of forest. So dear students, I would request you, okay, page number 46 also, figure 5.4, tropical deciduous forest example is there. Mark it. Okay, for now we have to stop here. Dear students, kindly go through the video properly. If you don't understand, rewind it and watch it again. Okay, for now, thank you very much. God bless you.